te logius poshat jane nga spera chik zera jeto ka bole nga la koreans yang na tourism ina nga last shows pin goma nge trekking shows pin te je sunge rafting shows pin ju rafting che shows pin de nga le trekking te mi ga chunga no ta ba campagne show testi nge skiing shows pin skiing ne nge heli skiing shows nga helicopter na le te nge spera in ta ibo nge lost khonga हिंदी ना भूलिन जो मैं जो लास्ट का जो शब्द कह रहा था वो मैं आपको लद्दाख हिंदी में कहना चाहता हूँ हेलीकॉप्टर एक ऐसा शब्द है जो फॉर समहाउ ये बड़ा ग्लैमरस लोग मानते हैं इसको देखकर पता नहीं क्यों काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं लेकिन शुरू मैंने कहाँ से की वो बताना ऐसा नहीं कि मैं भूला हूँ लेकिन उसे बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं टूरिस्ट गाइड था ट्रैकिंग एडवेंचर टूरिज्म किया करता था लेकिन एज ए एंटरप्रेन्योर मुझे पता था कि ले जैसे जगहों पे टूरिज्म ख़ासकर ये अर्ली 80s की बात अर्ली 70s की बात है लेट 70s की बात है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के डिस्टर्बेंस को चलते हुए टूरिज्म कभी भी बंद हो सकता है किसी ने नहीं सोचा कि इसमें से कोई धंधा बन सकता है तो लोगों ने मुझे डिसवेट किया मुझे उस बात का डर नहीं था मैंने कहा चलेगा जब तक चलेगा देखेंगे आगे कुछ ना कुछ रास्ता खुल ही जाएगा तो इस तरह से 2 साल मैंने ट्रैकिंग किया जी तीसरे साल मुझे ख्याल आया हर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास दो पाँव है वो मेरे साथ compete कर सकता है उससे बेहतर है मैं अपने लिए एक निश क्रिएट करूँ मैं वाइट वाटर राफ्टिंग का सोचा जिसको सीखने के लिए मैं नेपाल गया वहाँ पे मैं 4 महीना रह के वाइट वाटर राफ्टिंग स्टार्ट किया और उसके दूसरे साल लद्दाख में वाइट वाटर राफ्टिंग करते गया लेकिन अब ये दोनों एक्टिविटीज़ गर्मियों के 3 ही महीने में हुआ करते थे और 3 महीना की कमाई फ्यूचर में जब परिवार होंगे खर्चे बढ़ेंगे मैंने सोचा ये ठीक नहीं है मैंने सोचा यहाँ पे स्कीइंग सीखना चाहिए स्कीइंग सीखने के लिए मैं अपनी गर्मी की कमाई को लेके फ्रांस गया वहाँ पे क्रॉस कंट्री और नॉर्डिक स्कीइंग सीख के आया और देखा कि ले में जिस किस्म की इसके बर्फ़ होती है वो स्कीइंग के लिए उपयुक्त नहीं है तो उस तरह से मैं स्कीइंग लेकिन बाद में मनाली में जुड़ा बाकी कहानी आपके सामने है थैंक यू जी सर हम इस सत्र के समापन की ओर हैं और समापन जो हम लोग करेंगे वो करेंगे मधुराधिपते खिलम मधुरम भोजन बाद में होगा पहले मधुर सुनेंगे मैं निवेदन करूंगा आदरणीय चतर सिंह जी से कि मैंने एक बताया आपको कोई और दूसरा अच्छा लगता है कोई फरमाइश नहीं है जो आपको ठीक लगे लेकिन चूंकि हम राजस्थान के लोग हैं तो हम रिश्ते ढूंढते हैं तो रिश्तों का कोई हो या कोई पानी का आपके पास हो प्रकृति का हो जो भी आपको ठीक लगे हम चाहेंगे कि आपकी मातृभाषा में आप पहले बात करते हुए अपना जो भी प्रस्तुति करें वो सुनाएं हमको पहले रेगिस्तान में कोई साधन कौन था आवन जावन ना और नहीं कोई साधन कोई समाचार रो तो बहन बेटी ने कोई गाँव रो आदमी जाओ तो जानो जे ठा पड़तो हुए न तो वो आके समाचार पूछ लेती नानो डाडा नो मासी आई गाँव रा काशबी कोई भी आवता तो चाड़ू आवतो कोई तो चल के जाती और आप माई तोरा समाचार पूछने की कोशिश करती पहले बिया बहुत बचपन में कर देता छोटी थकीरो कर देता पछे डडोनरी याद तो आवती थी तो ये हालात महीना की वेदना झेलनी पड़ती है ना तो आप मोबाइल से कुछ शादी भी अब वैसे होने बाद में होने लगी और मोबाइल में रोज़ घड़ी घड़ी आप बातें कर सकें वो बड़ा कठिन दिन था तो बरसात रे बहन
भाई रो जो रिश्तो है वो ना कोकर वो मजबूत हो तो बेन आज भी हर श्रावण तीज रे हर श्रावण पहलो श्रावण शादी रो बाद में पहलो श्रावण तो पियर मौज बीते ये एक रीत भी है। और जीवन ना ज़्यादा श्रावण पियर में आज भी बीते तो ये भाई बहन माँ बाप रो रिश्ते रे संबंध में एक गीत है। हूँ ज़्यादा तो को नहीं जानतो है एक कड़ी गाँव है पेल सभी बेड़े छीके एक चौपाल माथे बच्चियाँ बैठ करके गीत गाते बरसात ना में कौन मेहमान मेहमान टाइप ही मोरोत बरसात आवे वो ना मेह कौन दूजो हणो जो आप कहो आत्मलोकन तो कौन बहू बेटी काकी चाची रो स्वभाव केड़ो है उवे ना छोटियों बच्चियों चौपाल माथे बैठ सार्वजनिक जगह सब रे बीच में बैठ के खुले रूप में गावे कि ये काकी रो ए स्वभाव ये काकी रो ए स्वभाव वो स्वभाव वो मोरुड़े सो जोड़े मोर सो जोड़े कि तू एड़ो मत होए और पछे उरी खामी रो हुए ना घरे बैठे एक हस्ती भी वो स्वीकार करे कि एक बच्चियां मौज बारे में ये सोच रही है तो वो आप में सुधार करे एड़ी परंपराओं भी आते हैं। तो मैं वो गीत बरसात आड़ोज गाऊं घना टाइम हो गयो पियर री याद आ रही है बरसात रा दिन आ गया जाना बच्चियों जो को आवे वो गांव गली वो पाड़े में मोहल्ले में एक ही जगह बैठ के सांझ रे समय रोटी खाने बाद में एक गीत गावे वो गीत रा ये बोल है मेवा झड़े मांडियो आई मौजी कजड़ोड़ी कतीजे बीरा बाईरा पर धरती मौजी पर धरती मत जाई चितौवन डालो। इसके बोल ये है कि मेवा झड़ रिमझिम में बरस रहे हैं मेवा झड़ मांडियो आई मौजी कजलोड़ी तीज श्रावण की मेरी तीज आ गई है बरसात ने रिमझिम कर बरसना शुरू कर दिया है मेवा झड़ मांडियो आई मौजी कजलोड़ी तीज बीरा बाईरा पर धरती हे बहन के भाई मैं पर धरती में हूँ बीरा बाईरा पर धरती भाई को कह रही है बहन कि तू पर धरती मत जाए वहां चित्तों मतलब याद आता है डाडाना जहां अपने जन्मभूमि है वो याद आती है। ये जब बालिकाएं गीत और भाई सुनता है तो सुबह बहुत जल्दी वो ऊंट लेके अपनी बहन को लेने जाता है और ये परंपरा आज भी कायम है जी। इन मधुर स्मृतियों को हम लोग जारी रखेंगे और पहले हम लोग मध्यांतर का भोजन करेंगे भोजन के बाद में सत्र में वापस शुरू होंगे। मैं सत्र के औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए निवेदन करूंगा आदरणीय प्रोफेसर अनुराग सर से कि वो आए एक औपचारिक आभार प्रदर्शन करें। कहते हैं कि एक बूंद ही शाही काफ़ी है आग लगाने को ये दिल ही नहीं दिमागों में भी क्रांति मचा देती है। सर आप दोनों ने छतर सिंह जी ने और आदरणीय सुंदराम जी ने जो एक छोटी सी जो बीज जो बोया और वो जिस तरह से पुष्पित और पल्वित हो रहा है न केवल राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप यहाँ पधारे विश्वविद्यालय के जितने भी डेलीगेट्स बाहर से आए हुए उनको इसके लिए लाभान्वित किया बहुत बहुत धन्यवाद सर आभार।
सुंडाराम जी, तो सुबह पता चला कि आप दांतारामगढ़ से बस से आ रहे हैं। मतलब एक ऐसी शख्सियत जिनको हमने कहा था कि सर आप कैसे भी कोई भी, लेकिन आप बस से चल के आए और फिर सिंधी कैंप से भी ऑटो करके आए, एक जो भारत सरकार में राष्ट्रपति से सम्मानित पद्मश्री से, और इनकी सहजता और शालीनता, जिस भाव से आप पधारे, ये विश्वविद्यालय आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। आदरणीय छतर सिंह जी कल भी हमारे साथ थे, अभी भी हैं, और आप पानी के लिए एक इस तरह से इनका जो अभियान है, लगभग 700 तालाब इन्होंने बनवाए हैं जैसलमेर बाड़मेर में। आपका ये जो अद्भुत योगदान है, ये राज्य आपको कभी भुला नहीं पाएगा सर। सावंत साहब हमारे परिवार के मुखिया भी हैं। मैंने कल भी चर्चा की थी कि आप पिछले 15 दिनों से घर से निकले हुए हैं, 10 दिन चाइना, फिर बिलासपुर, फिर रायपुर, रायपुर से दिल्ली, और दिल्ली में किन परिस्थितियों में परसों रात को यहाँ जयपुर पधारे। और सर लगातार हमसे 3 सेशन में जुड़े, अभी वैलिडिक्ट्री में भी हमारे साथ रहेंगे। सर आपका इस तरह का इस विश्वविद्यालय के आशीर्वाद जो आपने भाव रखा है, उसको आप बनाए रखें, हम सब इससे लाभान्वित होते रहेंगे। माननीय वांगचुक सुमुख साहब, आपने देखा कि छोटे से गांव से जो जहां जाना भी, रास्ता भी जाने का नहीं है, 3 दिन लगते हो, वहां से एक छोटे से गांव से निकले, और देश में आज इनका 15% शेयर है हेलीकॉप्टर बिजनेस में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से आप न केवल सोशल एंटरप्रेन्योर, जैसे आशुतोष जी ने बताया कि आप आध्यात्मिक यात्राएं उन लोगों को फ्री करवा रहे हैं जो जिनके पास जाने के लिए आर्थिक स्थितियां जिनकी मजबूत नहीं हो। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आदरणीय हमारे सीनियर प्रोफेसर विद्या जैन जी आज पधारी, मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रोफेसर अनिल मेहता साहब, डॉक्टर डेजी, अभी मेरी नज़र पड़ी थी कहीं, डॉक्टर डेजी, सुबोध कॉलेज से बहुत सारे लोग, बहुत फैकल्टी पधारे, अलग अलग विलग विलग स्थानों से, विलग विलग कॉलेजेस से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के लगभग 30 से ज़्यादा कॉलेजेस से यहाँ जो आप लोग डेलीगेट्स पधारे हैं, जिसमें फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने समय दिया। हमारे बीच 2 हमारे साथी हैं, शायद बाहर निकल गए। मिहिर जी जो एनडीटीवी के नेशनल न्यूज़ हेड हैं, वो दिल्ली से 2 दिन से हमारे साथ बने हुए हैं। और अयनजीत सेन साहब बेनेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मैनेजमेंट में, मीडिया मैनेजमेंट पे वो काम कर रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। मीडिया के जो लोग हैं, बाकी सब लोग जो अन्य यहाँ के कर्मचारीगण, सभी का धन्यवाद, आभार। अभी हम 2 बजे दोबारा यहाँ वैलिडिक्ट्री सेशन होगा। आप जल्दी से लंच अपना लेके, क्योंकि दिल्ली वैलिडिक्ट्री, अभी जस्ट एक मैसेज आया हमारे पास, डीजीपी साहब जो आदरणीय उमेश मिश्रा जी थे, कल आने वाले थे, अभी उनका मैसेज आया, मैं कल, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैं 2 बजे पहुँच रहा हूँ, तो वो भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। आदरणीय मैडम अल्पना, प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी, वो भी पधार रही हैं अभी। तो आप जल्दी से अपना लंच लेके फिर हम गैदर होंगे, जिससे कि हम वैलिडिक्ट्री की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थोड़ी है। वेलकम सर। एकदम मजबूरियाँ क्या नहीं, मुझे एकदम मिस हो गया, मुझे आज क्लिक किया, और मैं हॉस्पिटल से आ रहा था महात्मा गांधी से। यार बादल राजा है, वो 2.5 लाख रुपये लेता है यार। बादल राजा जानते हैं? नहीं जानते बादल राजा? जयपुर टॉप फोटोग्राफर है, दर्शन को पीछे रहते हैं। सर आइए। एक मिनट। Good afternoon, everyone. Today, we entrepreneurship
but to express our deepest appreciation for the brilliant minds who have graced this stage and shared their insights. First and foremost, let me extend my heartfelt gratitude to each of our esteemed speakers. Your willingness to share your expertise, experiences, and passion has elevated this event to new heights. So to begin with, I request Shri Umesh Mishra sir, Professor G.S. Murthy sir, Vice Chancellor Madam Alpana Kateja, and former Vice Chancellor Professor A.D. Sawant sir to kindly grace the dais with their presence. Please sir. थोड़ा सा हिलेगा क्या? I request Professor Anurag Sharma sir, coordinator of the event, and convener Ashutosh sir to join the guests on the dais. Thank you. I now request Professor A.D. Sawant sir to please welcome Shri Umesh Mishra sir with a shawl, memento and Shrifal. I request ma'am to please offer him a fresh bouquet of flowers. Please join your hands together for the guests of our valedictory session. Our chief guest, Shri IPS Shri Umesh Mishra sir, is not only an exemplary officer but also a beacon of integrity and dedication within the Indian Police Service. Sir has held various posts in the past. He has been Additional Director General of Police Intelligence, ADG Anti-Terrorist Squad and Special Operations Group, ADG Anti-Corruption Bureau, IG of Bharatpur, and he has also been Superintendent of Police of Kota City, Bharatpur, Pali and Churu districts. I again request you all to give a warm welcome to sir. I now request all the guests on the dais to please welcome Shri G.S. Murthy Sahab. Professor Ganti Suryanarayan Murthy. He is a professor of biosciences and biomedical engineering at IIT Indore. He is also the national coordinator of Indian Knowledge Systems, which is a division of Ministry of Education, Government of India. Murthy sir's main focus has been on developing sustainable solutions for a resource-constrained world. Please put your hands together for Professor G.S. Murthy sahab. देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे बीच में राजस्थान पुलिस के मुखिया श्रीमान आदरणीय उमेश मिश्रा साहब हैं। आप जैसा कि अभी आपने देखा, राजस्थान में अभी इलेक्शन हुए ही हैं 25 नवंबर को। एक ऐसा राज्य जिसकी लगभग 1100 किलोमीटर की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हो और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो, इस तरह के राज्य की आप मुखिया बनना और फिर शांतिपूर्ण मतदान करवाना,
ये न केवल राज्य के लिए बल्कि हम सब के लिए, पुलिस विभाग के लिए गौरव का विषय है। सर, हम इसके लिए आपका, हमारे सेंटर के कुछ विद्यार्थियों ने, जिसमें एक रिया यादव है, उसकी पूरी टीम है, उन लोगों ने आपका सम्मान करने के लिए ये 3-4 दिन से आपको लगातार याद कर रहे हैं कि सर ने जो जिस तरह से राज्य में चुनाव करवाए और जिस तरह से पाकिस्तान के क्षेत्र को आपने, जहां वहां कितनी तरह की थ्रेट्स थी, उनको कंट्रोल किया, ये राज्य सर आपके लिए और राजस्थान विश्वविद्यालय विशेष रूप से आपका आभारी रहेगा। I now request the dignitaries on the dais to release a book titled Social Entrepreneurship, Introspection and Future Strategy, which is basically a compilation of chapters authored by various scholars and faculties of different institutions. Thank you, sir. Thank you, ma'am. During the past 2 days of the conference, we have come across speakers from different backgrounds representing a wide spectrum of industries and expertise. The diversity has been the cornerstone of our success, fostering a truly inclusive dialogue that reflects the complexity and richness of our world. So, the inaugural day of the 2-day Social Entrepreneurship Seminar witnessed a captivating blend of cultural presentations and enlightening discussions resonating with the theme of entrepreneurial possibilities in diverse domains. The morning session commenced with a mesmerizing performance by Padma Shri Munna Masterji and Mand singer Begum Batul, presenting a melange of Guru Vandana, Ganpati Stuti, and Rajasthani folk songs. The event's inaugural address by former Vice Chancellor Professor A.D. Sawant Sahab delved into the symbiotic relationship between entrepreneurship and environmental concerns, emphasizing the potential for innovative solutions. The keynote speaker, Shri Mihir Gautam, National Editor of NDTV, took center stage advocating for the integration of entrepreneurship into the dynamic realm of social media. Shri Gautam Sahab highlighted the pivotal role of social media in contemporary business landscapes, urging the younger generation to explore entrepreneurship in this digital sphere. Mr. Sunil Sharma, Commissioner of College Education, Government of Rajasthan, shared insights on the state's initiatives for entrepreneurship and skill development. The emphasis was not only on creating employable workforce, but also on nurturing a generation inherently inclined towards entrepreneurship. The afternoon session was dedicated to exploring successful social entrepreneurship experiments
related to water, environment, and nature. Esteemed figures like Padma Shri Lakshman Singh Ji, Padma Shri Ram Kishore Derewala Ji, Professor Ayanjit Sen, Shri Chatar Singh Ji Jam, and Shri R.S. Choyal Ji shared their experiences, enriching the discourse on sustainable entrepreneurship. The second day promised to continue the discussions on various aspects of social entrepreneurship, featuring luminaries like Padma Shri Sundaramji Verma, Padma Shri Shyam Sundar Paliwal, and others. The agenda included panel discussions on scaling successful experiments at the socio-academic level. The first day's event had set a promising precedent, creating an atmosphere ripe for knowledge exchange and paving the way for dynamic exploration of social entrepreneurship. The 2-day promised the presence of noteworthy individuals, adding depth and diversity to the discourse. And among the attendees, Sri Wangchuk Shamshuji, the founder and CMD of Himalayan Heli, shared insights into his pioneering venture. Mr. Shamshuji delved into the challenges he faced in the initial years of establishing helicopter services at pilgrimage centers such as Amarnath, Vaishno Devi, and Kedarnath. His narrative is expected to provide a unique perspective on the intersection of entrepreneurship and service provision in challenging the terrains. Following Mr. Shamshu, Padma Shri Sundaram Verma Ji, a prominent Indian environmentalist, took the stage. Noted for his groundbreaking work in introducing dry land forestry technique, Mr. Verma has been actively engaged in combating desertification. His green grassroots plantation initiative aimed to transform arid landscapes, offering a sustainable solution to environmental challenges. So these personalities brought a wealth of practical experience and expertise, enriching the seminar with real-world examples of social entrepreneurship. Their stories of perseverance, innovation, and commitment to positive challenge aligned with the overarching theme of the event, fostering a platform for shared learning and inspiration. So now, as the seminar unfolds, participants eagerly anticipated the valuable perspectives and lessons these distinguished individuals brought to the table, further fueling the exploration of social entrepreneurship and its potential impact on the diverse sectors. So this summarizes the 2-day we witnessed during this international conference. And now I would like to request Professor Anurag Sharma sir, coordinator of the event, to present a formal welcome to the guests. Please, sir. वैलेडिक्टरी सेशन के चीफ गेस्ट, राजस्थान पुलिस के डीजीपी आदरणीय श्रीमान उमेश मिश्रा साहब, इंडियन नेशनल नॉलेज सिस्टम के नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर गांधी मूर्ति साहब, हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय की मुखिया आदरणीय कुलपति जी प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी, आदरणीय प्रोफेसर एडी सावंत साहब, आदरणीय पद्मश्री सुंडाराम जी, आदरणीय छतर सिंह जी, वांगचुक सुमुख साहब, एनडीटीवी के नेशनल एडिटर आदरणीय मिहिर गौतम साहब, बैनेट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अयनजीत सैन साहब, हिंदुस्तान में जो कॉलेज नैक और अलग अलग एक्रेडिटेशन में नंबर 1 आता है उसके प्रिंसिपल प्रोफेसर के शर्मा साहब, प्रोफेसर अनिल मेहता साहब, आदरणीय सुनील जी, राजीव सक्सेना साहब, अलग अलग कॉलेजेस के हमारे फैकल्टी के डीन्स, प्रिंसिपल प्रोफेसर भवानी शंकर जी, देश के विलग स्थानों से जो पधारे हुए डेलीगेट्स हैं, सेंटर के और विश्वविद्यालय के प्यारे विद्यार्थियों और मीडिया फाउंडेशन के हमारे साथी, प्रोग्राम के कन्वीनर, मीडिया फाउंडेशन और इंडियन यूथ पार्लियामेंट के डायरेक्टर आदरणीय आशुतोष जी को मैं पुनः दोबारा से, आज मैडम इनका जन्मदिन है, हमने सुबह भी इनको सेलिब्रेट किया था, दोबारा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, आपको पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।
जैसा कि अभी आपको डिटेल्ड रिपोर्ट बताई गई कि पिछले 2 दिन से हमारे यहाँ क्या क्या कार्यक्रम हुए। कल इनॉग्रल में आदरणीय उमेश मिश्रा साहब आने वाले थे। हमारे कम्युनिकेशन गैप रहा, उसमें थोड़ी सी मेरी भी रही। जब हम सुबह बात कर रहे थे मैं शायद समझा नहीं पाया, या मुझे ऐसा लगा इन का भी थोड़ी तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है और मैं कहीं हूँ, तो मैं शायद समझ नहीं पाया। इन्होंने कहा फिर कल देखते हैं। तो सर, आप ऐसी व्यवस्थाएं, जब राज्य में अभी चुनाव होकर संपन्न हुए हैं, रिजल्ट आना बाकी है, ट्रांजिशन का फेज चल रहा है कि क्या होगा, और सिक्योरिटी एक इतना बड़ा थ्रेट है कि सारे राज्य की 200 विधानसभाओं की जो इलेक्शन जहाँ हुए हैं उनकी सारी मतपेटियाँ अभी आप ही के निर्देशन में आपकी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की सुरक्षा में रखी हुई है। ऐसे में आपकी जो जिम्मेदारी हम सब समझ सकते हैं। बावजूद इसके आपने समय दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय का सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट और मीडिया फाउंडेशन, इंडियन यूथ पार्लियामेंट आपके इस कार्य के लिए, कृत्य के लिए हार्दिक आभार और व्यक्त करता है, धन्यवाद प्रेषित करता है कि आप ऐसे समय में आप आए और हम सब आपको देख, क्योंकि पुलिस से बड़ा कोई मोटिवेटर और कोई एंटरप्रेन्योर हो नहीं सकता। क्योंकि पुलिस तो हरदम, एंटरप्रेन्योर में 2 ही बातें होती हैं कि आपको कुछ पाना है तो जोखिम लेनी पड़ेगी, और पुलिस में तो हरदम ही जोखिम है, लाइफ का थ्रेट है। तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। प्रोफेसर गांटी मूर्ति साहब, जिनके पास में अभी एक इतना बड़ा मिशन ये कंट्री के लिए लेके चल रहे हैं, और इन्होंने जो समय निकाला सर, ये राजस्थान विश्वविद्यालय सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप मीडिया फाउंडेशन आपका तहे दिल से हार्दिक आभार करती है, धन्यवाद करती है कि आपकी व्यवस्थाएं हम समझ सकते हैं। आप दिल्ली से सुबह चल के और दिल्ली से बाई रोड आना, और फिर अभी आपने वापस जाने का प्रोग्राम भी ये तय कर रखा है कि मुझे 5 बजे ही वापस भी जाना है। फॉर्मल निवेदन तो हमारी मैडम करेगी। अब राजस्थान विश्वविद्यालय से हम आशा करते हैं सर कि एक इंडियन नॉलेज सिस्टम का सेंटर हमारे यहाँ भी खुले। इन्होंने ये भारतवर्ष में इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो पूरे राज्य को लाभ मिलेगा। और चूंकि हम इसलिए अधिकार से आपको कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है ये, और स्वीकृति भी मिल गई, तो आपकी बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आपने स्वीकृति भी दे दी बोलते बोलते, बात करते करते। प्रोफेसर A.D. सावंत साहब, पिछले 15 दिनों से, मैंने पिछले सेशन में भी कहा, घर से निकले हुए हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट में और कुछ साइंटिस्ट केमिस्ट्री एसोसिएशन कोई मीटिंग में चाइना थे। आप 10 दिन लगातार चाइना रहने के बाद जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा मैं कैसे भी कोशिश करूंगा, चाहे मुझे कैसे भी आना पड़े। आप वहाँ से बिलासपुर गए, रायपुर गए, रायपुर से दिल्ली परसों शाम को पहुँचे, और फोग था तो हमें एक डर सा था कि पता नहीं अब क्या होगा। सर कह रहे थे यहाँ तो फ्लाइट ही नहीं है कोई जब, लेकिन एनीवे 9 साढ़े 9 बजे फ्लाइट मिली और रात को 12 बजे तक आप जयपुर पहुँचे। और इस तरह के व्यस्त कार्यक्रम में 10 दिन बाहर विदेश में रहना और घर वालों को भी मिस करना, और आपके पास कंट्री की बहुत सारी जिम्मेदारी है। मैंने कल सर को कहा था कि सर आप बीइंग एन एकेडमिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर और एक केमिस्ट्री साइंटिस्ट और सब तरह से, लेकिन आप एक एक्टिविस्ट है, ये हमको कल ही पता चला कि आप सड़क पे भी कई सारे मुद्दों को कोर्ट तक ले गए, सरकार से लड़ा, और वो कई सारी इंडस्ट्रीज इन्होंने बंद कराई जिससे कैपिटल, वो केमिकल हैजार्ड कुछ निकल रहा था। सर राजस्थान विश्वविद्यालय, चूंकि आप तो हमारे मुखिया रहे हैं, आपका आभार। हाँ, अभी बताता हूँ ये बात भी, मेरे से एक बात मिस हो गई थी। ये जो किताब का अभी इनॉग्रल हुआ, ये प्रोफेसर राजीव पंत साहब जो सिलचर आसाम यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उन्होंने इस बुक का प्रीफेस लिखा है। और हमारे लिए ये फक्र की बात है सर कि वो हमारे गुरुमूर्ति गांधी साहब के गुरु भी हैं। ये प्रोफेसर आइए, अब ITN वो भी आए, तो वो आपके मैनेजमेंट के गुरु भी रहे हैं। तो उनसे जब बात हो रही थी उन्होंने कहा कि नहीं वो ही विल ज्वाइन योर प्रोग्राम। उन्होंने गुरु भाव से आपके लिए हमको पहले ही इंश्योर कर दिया था। आपका सर बहुत धन्यवाद। हमारे जो कुल की मुखिया है आदरणीय प्रोफेसर कटेजा जी, अल्पना कटेजा जी, आप मैडम, जब से हमने ये प्रोग्राम पिछले 1 महीने से जब हम मैडम को लेके मिले कि मैडम इस तरह का एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो मैडम ने कहा कि आप तो ये बताइए कि आपको विश्वविद्यालय से क्या चाहिए, फंड चाहिए, जगह चाहिए, कोई व्यवस्थाएं चाहिए। सुबह भी मैंने मैडम को मैंने कहा मैडम आप वैलिडिक्टरी 2 बजे तक है तो आप जरूर, तो मैडम ने कहा आप तो काम बताओ कोई। तो ये इस तरह का जो भाव आपने मैडम इस पूरे सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और सेंटर के ऊपर रखा,
ये हम सब आपका बहुत ही आभारी और आपका धन्यवाद। सभी डेलीगेट्स जो पूरे राज्य भर से हिंदुस्तान के विलग विलग स्टेट से पधारे हैं, सुबह हमारे साथ ऑनलाइन जो जो भारत स्वच्छ मिशन और मेक इन इंडिया प्रोग्राम के जो इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रोफेसर डीपी शर्मा साहब, वो यूएस से हमसे जुड़े थे। उन्होंने भी काफ़ी हमसे बातें की। उनका सेशन हम यहाँ लाइव तो नहीं चला पाए, लेकिन रिकॉर्ड करके हम चला पाए। वो प्रोग्राम भी उनका, सावंत साहब ने फिर उनको काफ़ी इनपुट्स भी दिए। आप सब लोगों का इस वैलिडिक्ट्री में पधारने के लिए मैं पुनः राजस्थान विश्वविद्यालय और सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया मीडियम फाउंडेशन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आज ये अचानक अभी 2 सूचनाएं और आई हैं, ये हम सब के लिए कुछ। प्रोफेसर अयानजीत सेन साहब, इनको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अभी घोषणा हुई। अभी ये न्यूज़ ऑल ओवर इंडिया, ये इनका कंट्रीब्यूशन, अगर इनकी गवाही नहीं होती तो अफजल गुरु फांसी तक नहीं जाता। ये वो शख्स हैं जिनको जब सबसे पहले इनके पास ही फ़ोन आया कि ऐसा लाल किले पे थ्रेट है, और इन्होंने बीइंग ए सिटीज़न ऑफ इंडिया अपना मीडिया को बाद में रखा और सिटीजनशिप को पहले रखते हुए कमिश्नर दिल्ली पुलिस को सूचित किया कि इस तरह का कोई थ्रेट है, मेरे पास वार्निंग आई है। और ये खुद बाद में मीडिया के साथ लाल किला पहुंच गए। भगवान का शुक्र है कि गोलियां पास से तो निकली, 3 सिपाही इनके इर्द गिर्द थे, वो वहाँ मारे गए। बाकी बाहर जो कैजुअलिटीज़ हुई वो काफ़ी अलग हुई। तो आप तो सर हक है, राजस्थान विश्वविद्यालय इस अवार्ड के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता है। हम सब की ओर से, सावंत साहब की ओर से, डीजीपी राजस्थान पुलिस उमेश मिश्रा साहब की ओर से, क्योंकि आपने जो राष्ट्र के प्रति जो अपना जो कर्तव्य था उसको निभाया, निश्चित रूप से आप उस अवार्ड के हकदार हैं। आपको पुनः बधाई। और सावंत साहब तो कल ही बात कर रहे थे कि मैंने केमिस्ट्री में ज़िंदगी के लगभग सर 68 तो लगभग 40-50 सालों के जीवन में इन्होंने केमिस्ट्री को दिया। इनका कंट्रीब्यूशन तो बस एडी सावंत, प्रोफेसर एडी सावंत ही काफ़ी है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप जिस तरह के आपके प्रयोग हैं, जो जी कल आपने हमारी पूरी सेमिनार का बेस भी बनाया कि हाउ वी कन्वर्ट वेस्ट इनटू द वेल्थ, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात है कि हम एनवायरमेंटल फ्रेंडली डेवलपमेंट कैसे करें और वो सस्टेन कैसे हो, इस पे कल आपका कीनोट और प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स थे। तो आपको सर बधाई। आपको शायद ये अवार्ड कलकत्ता में मिलने वाला है, तो आपको पुनः बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना बड़ा अवार्ड, जो कि पूरे लाइफ का आपका अचीवमेंट है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. All the eminent personalities who motivated us, inspired us during these 2 days are requested to join our guests on the dais. I request Mr. Wangchuk Shanshuji, founder CMD of Himalayan Heli, Shri Chatar Singh Jamji, the water wizard, Ayanjit Sen sir from Bennett University and ex-editor ABP News, Mr. Mahir Gautam, National Editor NDTV, and Padam Shri Sundaram Verma ji. I request all these dignitaries to please grace the dais with their presence. Moving on, I request Professor G.S. Murthy sir to please address the gathering. मातृभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः, सभायै नमः, सभापतिभ्यश्च नमो नमः।
A very warm good afternoon to all of you. And it gives me great pleasure to visit this land of Rajputs and Rajputana. And this is great to be here in Rajasthan. And thank you for this opportunity to be here. Enjoy. I was wondering when Ashutoshji had called me a few weeks ago and then asked me to come and address basically a gathering of entrepreneurs and to-be entrepreneurs and who are actually successful entrepreneurs. I was wondering what I would be speaking in front of you as a professor of in IIT Indore and then a somewhat partially failed entrepreneur in the sense that I have a startup company, and then I was just wondering and then as the national coordinator of the Indian knowledge systems, what is it that I should be speaking to you about? And then I realized maybe one of the things that we need to be talking about and thinking about is this: what is a Bharatiya perspective? What is the Indian perspective on what we are talking about as social entrepreneurship? And what is the frameworks of reference that we can think of? Because if I go into talking about what is entrepreneurship, how do you get there, how can you be successful, you're all equipped with that tools. But what I'm going to address today is about the question why. Essentially, if you think about the difference between, as you all know, the difference between a strategy and a plan is that strategy answers the question why. And then plan talks about how. A plan with why becomes strategy. So what I'm going to talk about today is that question of why. And there I want to present to you this Loka Sangraha, which is essentially a Bharatiya framework. And what is it about? So if you look at the existing world today, we are facing many existential challenges. As basically people who know economics and you're cognizant of the social conditions everywhere, you know that the socialist and capitalist systems are failing or have failed. And then even the capitalist systems, we see that there are many problems, especially income inequalities. The medical healthcare systems are not working for people anywhere. I mean, most of the people, poor people, cannot use the healthcare systems, it's unaffordable and things like that. And then in addition to that, the overexploitation of the natural resources, because I do a lot of the systems analysis and sustainability research. When you look at things, it's really the kind of unsustainable practices that we are engaging in is really placing the world on the brink of disaster. And it's not just the climate change, it's also about the access to energy sources, food, water, and all of this has become really a challenge. That is when we need to step back a little bit and think about that question why. Then when you think about it, you will realize that there is an Indian way. There is an Indian way that is sustainable and works for the welfare of all. Why do I say that so confidently? Because if you look at at least 2 millennia, for most part of it, about 1500 years, we were the topmost country which led the world GDP. We were an economic powerhouse. We were a knowledge powerhouse, knowledge creation powerhouse. Everybody used to come to India to learn from everywhere. We all know that. And we used to export goods almost at industrial scales almost till late 18th centuries and early 19th century as well. And we were socially cohesive. And if you look at the old civilizations, we are the only civilization that is continuing to survive. So there is something about us. And what is that? That is what essentially we call as an Indian way. But unfortunately, do we really understand what is that heritage today? I think it is time to look into that and get that perspective. Because ultimately what happens is, all the foundations of a society are dependent on the perspective that we gather. And if we are facing existential challenges today, the way to solve them is to get a fresh perspective. And that is where I think we can use the Bharatiya perspective. And it's not just about humans. I mean, when I say sustainability, all of those things, it's not just about us humans, it's about the world. Because we live on a pale blue dot. As Carl Sagan famously quoted about that picture of Earth taken from Voyager in 1994 or 1992, I think. Earth was just one small pale dot, blue dot, in the entire cosmos. When you look at that, we are already exceeding the limits, planetary boundaries, whether we talk about nitrogen cycles, carbon cycles, or very close to hitting the basically the phosphorus limits in terms of the phosphorus cycles. And so really it's a existential challenge that we are facing. And then
this is where, again, as I say, the Indian knowledge systems will provide a unique perspective, which is holistic and is multidisciplinary in approach. These are all the words that we normally tend to use these days, but essentially this is something that is inherent in the Bharatiya knowledge systems. And what makes it unique is the Bharatiya Drishti, the perspective. And it's multidisciplinary, holistic approach and innovative approaches. So I'm not going to talk more on these things today, but I will just focus my this thing only on the Bharatiya Drishti per se. Because the first thing is, whatever we do, we should do no harm, whatever we do. And this is where the national ethos of Bharat comes in. The civilizational ethos is all about, it's very eloquently said in Ishavasya Upanishad, Ishavasyamidam sarvam yatkincha jagatyam jagat. We see the divinity in every little thing, everything from the atom to the cosmos. And what that does, it gives you a perspective. And I will try to show you how that is important for you if you are getting into social entrepreneurship. As social entrepreneurs, how is that very important? And it's not just the Shastra Parampara, it is also the Marga Parampara. So if you go to Arunachal Pradesh, where I studied, there is this thing called Doni Polo Ome, which is essentially they consider themselves as the children of sun and the moon. And then we are really part of the nature, and that essentially that kind of a holistic approach which is grounded in reality is essentially the national ethos of Bharat. And then I was talking about that Bharatiya framework. I will talk to you about that in two things. One is at 3 levels of reality that we normally talk about. First is Adhibhautika, then it is Adhidaivika, then it is Adhyatmika. These are the 3 levels of existence that we look at. For example, if you look at a hand, right? If I'm using my eye, regular eye, what do I see? I see a hand with skin and all that, right? Now, imagine I replace my eyes with an X-ray vision. What will I see here? I'll see bones, right? Imagine I've replaced my eyes with an electron microscope. What will I see? I'll see a bunch of atoms. So it is essentially about 3. Should I say that the X-ray vision of seeing bones is wrong? Not really. That is also true, but it's at a different level of basically things. So that is essentially what we are talking about, the 3 levels of reality. The Adhibhautika reality means the physical reality that we see, we can touch, basically we engage in with our senses. Adhidaivika comes from Daiva, means Div. One is to shine, that means Devatas. Something that we cannot see, something we can, basically it is all the mental faculties that we indulge in. It is not really the sensory organs, but the mental faculties, the thoughts, thought processes and things like that. And the Adhyatmika is the spiritual world. So we can look at anything from these 3 perspectives. And I will talk to you about all of these things in that perspective. And then the framework that we use from a Bharatiya perspective to look at life is the Purushartha framework, which talks about the Dharma, Artha, Kama and Moksha. What is this Dharma? If you think about it, essentially it means Dhrutya Dharayate Dharma. Something that upholds and sustains is Dharma, and something that is practiced is Dharma. So things that are just bookish knowledge is like undigested food. It is not good. Only practice, something that is in practice is like a digested food that will nourish. Dharma is also something that is practiced, only then it will nourish. In fact, in Ramayana, when Rama was going to the forest, Kausalya blesses him with a very beautiful verse. She says, Yampalayasi dharmatvam dhrutyacha niyamenacha savairaghava shardhola dharmastvam abhirakshatu. Dharmastvam abhirakshatu means, may that dharma protect you. But she qualifies that. What does she qualify it with? Yampalayasi dharmatvam. The dharma that you uphold, may that dharma protect you. Not simply the dharma I say, not the dharma that I read, but the dharma that I practice. What is dharma then? It is not religion. What it means is, there is something called satyam. So the framework that we use is the satyam. That is the cosmic truth that is there, out there. And then there is a cosmic order that we see. The satyam becomes ritam. When it is expressed, it becomes the cosmic order. Essentially, you see the laws of gravitation, you see the planets, galaxies, laws of life. All of that cosmic order is called ritam. The satyam, when it is expressed, manifests, becomes ritam. And anything that aligns with that cosmic order is dharma.
anything that, whether it is at a personal level, societal level, or at a spiritual level. So that is what dharma is about. How do we align with the natural cosmos, natural order, rita? And then, if we order that way, align that way, then it becomes brihat, something that is big. So that is why you'll see a lot of the characterization when we talk about in the Shastras, Satya Dharma, Satya Rita Dharma. And then next comes the Artha. So that is essentially the reference framework for us. How do we align with the universe? That is the first Purushartha. So the point is, whatever we are trying to do, we should align with the natural order and the cosmos. Then comes the Artha. What does Artha mean? Artha in very mundane translation means wealth, but it is much beyond that. Essentially, whatever gives us basically whatever the means of this thing, Lakshmi, essentially, if you think about it, Dhairya is Artha, Dhanya is Artha, Ashwa, Gaja, all those things are Artha. Means any kind of wealth is not just physical, but also the mental health. Wealth is essentially your Artha. And that is something that has to be earned by the dint of our hard work. Then that goes to the third Purushartha, which is Kama. Kama is a very interesting Purushartha. It occurs here as a Purushartha, something that we have to acquire, but also occurs in Arishadvarga, the 6 enemies of person. Kama is also there. So essentially, the Kama, the expectation to enjoy something, if it goes unfettered, becomes an enemy, but if it is something to be pursued also. So it is like science. Normally we say that, right? Then there is this ultimate Purushartha called Moksha. And when we look at the social entrepreneurship from an Adhibhautika point of view, so I'm going to use the 3 framework, the 3 levels of reality framework. So I'll talk about the social entrepreneurship from an Adhibhautika perspective using the 4 Purusharthas. And then try to give you some examples. Then we'll go to Adhidaivika, then we'll go to Adhyatmika as well. And if you look at the Adhibhautika point of view, what is it that we all strive for? If you look at the fundamental thing that any living organism strives for, it is happiness. We all really want to be happy, whatever it is. If you want to earn money, if you want to earn respect, if you want to earn fame, if you want to earn some degrees, education, what is it in the end? At the end of the day, it is all about happiness. So, basically we connect Vidya with the Sukha. By the way, Sukha is a very interesting word. It is not simply pleasure, it also means good spaces. Kha means space, Sukha means good spaces. Good spaces physically, mentally and all that. So what does Subhashita says? Vidya dadati vinayam. Vinayadhyati patratam, patratvam dhanam apnoti, dhanat dharmam tatas sukham. Vidya gives you vinaya. Vidya dadati vinayam. Humility. So essentially it is cautioning that Vidya, the knowledge, should lead to humility. Then Vidya vinayadhyati patratam. So patrata is the expertise. So we get the expertise, and then patratvam dhanam apnoti. From that we get, basically we'll be employed and we'll get, or we will become an entrepreneur, or we'll actually generate wealth. So then we'll get the dhanam. Then dhanat dharma, with the dharma, then sukham, tata sukham. The end is sukha. So the point is, if you look at very closely, there is between vidya and patrata, there is vinaya. Between knowledge and the expertise, there is humility. And if you look at patratvam and dhanam, and if you look at dhanam and sukham, there is dharma. So whatever aligns with these things is essentially what is good for from a Adhibhautika point of view. And then normally when we talk about Bharatiya perspective, people think that it is all about spirituality, renunciation and things like that. Not really true. In fact, there is a very good Subhashita which says, Mata nindati nabhinandati pita bhratana sambhashate bhrutyah kupyati nanu gacchati sutah kantacha nalingyate artha prardhana shankaya nakurute sambhashanam vai suhrit tasmat naitika virt arthamarjaya shunusakha arthena sarve vashar. What it means is Mata nindati, mother will scold you. Nabhinanditi pita, father will not appreciate. Bhratana sambhashate, siblings will not talk. Bhrutyah kupyati, the servants will be angry with you. Nanu gacchati sudha, children will not approach. Kantacha nalingyate, the consort will not embrace. Artha prardhana shankaya, fearing that you will ask for a loan,
Nakurute sambhasham suhrut. The friends will not even talk to you. Therefore, it says, Tasmat naitika vir arthamarjaya shrunu sakha. Therefore, it says, earn money in an ethical way. It says, earn money, arthamarjaya. But it also says, naitika, in a proper way, in an ethical way. Shrunu sakha, because arthena sarva avasha. And then it also cautions, the Subhashitas also caution. Atitrushna kartavya. Trushna is a desire. Atitrushna kartavya. A lot of desire is not good, but then trushna naiva parityaje. Do not leave the desires either. So there has to be balance. You should not think of being desireless completely. At the same time, don't have too much that. Shanai shanaischa bhoktavyam swayam vittam uparjitam. So we have to basically enjoy whatever we have earned in a slow manner. So essentially this is talking about delayed gratification, which is a challenge. And especially if you are going to be in entrepreneurship area, delayed gratification is really the key for success there, because nothing will come out in the first day. And then also it talks about alasyam hi manushyanam sharirastu maharipu. Laziness is one of the biggest enemies that we have. Nasti udyama samo bandhu. There is nothing more dear than, closer, like a relative than udyama, hard work. Krutvayam navasidati. Doing which, that means doing hard work, nobody is avasidati, faces any hardships. So essentially what is this? This talking about from a adhi bhautika frame. So it's essentially nothing, no spirituality here, nothing about anything else. It is all talking about the physical world. It's saying, okay, money is important, get the money, and leave the laziness, all these things. Again, these are all the words from Subhashitas and the Upanishads. So then let us talk about Adhidaivika. So now we are thinking about this from a mental plane. So first thing, Adhibhautika thing, we saw that it's important to earn money, and it's not, but then same Vidya, there has to be Vinaya, there has to be Dharma and all that. So again, aligning to those four Purusharthas. When we talk about Adhidaivika point of view, which is essentially the mental faculties, then what motivates us as entrepreneurs, and especially as social entrepreneurships, is a greater good, the feeling of doing greater good to the society. And therefore, there is a this thing that says, Subhashita that says, Adhama dhanam icchanti, dhanamanam cha madhyamaha, uttamah manam icchanti, manohi mahatam dhanam. Adhama dhanam icchanti. The only worst people will only want money, pursue money. But then somewhat the mediocre people will like both money and the fame. And uttamah manam icchanti. The best ones will go after the fame and essentially the social standing. Manohi mahatam dhanam. And then it also, there is a good Subhashita from Pachatantra. It says, Yasmin jivati jivanti bhava satu jivati. One who lives for others is the one that who has really lived. Then kakopi kimna kurute chanchva sodara puranam. I mean, the crow also eats with its beak, so there is no point in living like a crow, is what that thing is to say. And then there is a story of Rantideva from Bhagavatam. He was a Chandravamsha king who was someone who was very passionate about his people. He was a king. And then, he was offered this moksha, which is the fourth Purushartha. He said, we are so happy with you. What is the boon that you want? You know what he says? Natu aham kamaye rajyam. I don't want the kingdom. I don't want the rajyam. Na swargam. I don't want the heaven. Na apunar bhavam. Neither the moksha. What is it that he wants? Kamaye. What does he want? Dukkhataptanam praninam artanashanam. Praninam, dukkhataptanam praninam. The one, all the living things that are basically having distress. I want to make sure that their arti, that distress, is removed. Nashanam, arti nashanam. That is the kind of higher mental faculty that motivates people, especially if you are going to be in the social entrepreneurship thing. These are the kind of things that talks about, the Indian perspective talks about it. Then when we look into the Adhyatmika perspective, and you're really looking at why is it that we want to do these things and what makes us do that. A very interesting conversation that happens in Brihadaranyaka Upanishad, where Yajnavalkya has a conversation with his wife Maitreyi. And
basically what Yajnavalkya is trying to do is trying to go away by giving all the money and all these things to his wife, and two wives, Katyayani and Maitreyi. So then Maitreyi asks, Sahovacha Maitreyi, Yanaham anamrutasyam kimaham tena kuryam. She asks, will this give me the eternal happiness? Because all these things are going to go away. So he says, no, it doesn't give you.